Hello, my dear students, and welcome to your favorite educational YouTube channel, English Wali Ma'am, or as you also know me on YouTube, Educator Prerna. So, आज हमारी OTT series by day 54 Know How to Get the Perfect Score का episode 45 है और आज के episode में भी हम writing section जो है उसको रिवाइज करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, और आप सबको पता है कि मैम आपको आंसर्स कैसे समझाती हैं using the sample papers that CBSE has issued. Alright, so आज के एपिसोड में हमने प्रीवियस एपिसोड में एनालिटिकल पैराग्राफ को समझा था। आज के एपिसोड में हम समझेंगे अबाउट लेटर राइटिंग। नाउ लेटर राइटिंग बेटा आप लोग मोस्ट ऑफ यू मतलब क्लास 5 से तो हमारे लेटर राइटिंग जो है वो शुरू ही हो जाती है। अब आप लोग क्लास 6 टू 9th भी बहुत अच्छे से फॉर्मल लेटर राइटिंग जो है उसको करते आए हो। सो अब समझते हैं कि जब हमारे पास लेटर राइटिंग का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, हाउ वी आर सपोज टू आंसर इट। जिन बच्चों ने मैम को सब्सक्राइब किया हुआ है दे ऑलरेडी नो सर्टेन पॉइंट्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड when we are answering a question of letter writing in our board exam. अब अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लेटर राइटिंग का जो क्वेश्चन है दैट इज ऑफ 5 मार्क्स और ये 5 मार्क्स कैसे डिवाइडेड होते हैं। 1 मार्क होता है फॉर्मेट का, 2 मार्क्स इज फॉर योर कंटेंट, थर्ड देन 1 मार्क इज ऑल्सो फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ideas that you have done, and then you have accuracy. जो accuracy है उसका भी 1 मार्क्स है। So 1 for format, 2 for your content, overall content, 1 mark for the organization of ideas and 1 mark for accuracy. Accuracy में 3 points क्या देखे जाते हैं, spellings, punctuations and punctuation marks and grammar. Alright, so इस तरह से आपके पेपर में 5 marks divided होते हैं। सो आप सबको पता है कि आपके पास एक फॉर्मल लेटर आएगा विच वुड बी बेस्ड ऑन अ गिवन सिचुएशन। ऑलराइट, सो हम एसक्यूपी जो 2024 का जो इस साल का एसक्यूपी है उससे क्वेश्चन पढ़ते हैं एंड देन लेट अस ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ऑलराइट, सो 4A क्वेश्चन है आपके एसक्यूपी में। इट सेज यू आर निर्मल पिल्लई, अ कंसर्न सिटीजन फ्रॉम अलोवा कोची, compose a letter in about 120 words to the project head of the e-waste management cell at Electronics Vatika, New Delhi, highlighting the adverse effects of e-waste pollution. Suggest measures for addressing its management through community engagement and government initiatives. और आपको जो e-waste है उसकी डिस्क्रिप्शन भी दी गई है। Discarded electronic devices such as smartphones, computers and televisions which are no longer in use or they have crossed their life cycle. ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए कि ई वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसको आप कैसे कर सकते हो। आपको लेटर लिखना है किनको, टू द प्रोजेक्ट हेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स वाटिका इन न्यू दिल्ली। तो लेटर जो है उसमें सबसे पहले फॉर्मेट की बात करते हैं। तो क्या फॉर्मेट होता है, सेंडर्स एड्रेस, देन यू लीव अ लाइन, डेट, लीव अ लाइन, रिसीवर्स एड्रेस, लीव अ लाइन, सब्जेक्ट and then leave a line salutation, and then your letter needs to be divided into 3 paragraphs, 3 different paragraphs, and then you do a you give a concluding salutation like yours sincerely, then you do your signature, you write your complete name। एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है बेटा लेटर राइटिंग में या मे बी इन एनालिटिकल पैराग्राफ ऑल्सो, जो नेम या एड्रेस आपको क्वेश्चन में दिया गया है मेक श्योर यू यूज ओनली दैट एंड नथिंग एल्स। ऑलराइट, जैसे ये क्वेश्चन यू आर निर्मल पिल्लई, ये जब क्वेश्चन मैंने बच्चों को प्रैक्टिस के लिए दिया तो कुछ बच्चों ने निर्मला पिल्लई लिख दिया। ऑलराइट, सो बी वेरी केयरफुल as to what you are writing. So sender's address, date, receiver's address, subject, salutation, the 3 paragraphs and then the concluding salutation. सो मैम ने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि आपका जो लेटर है वो 3 पैराग्राफ्स में डिवाइडेड होता है, जिसमें आप फर्स्ट पैसेज में लिखते हो अबाउट, यू राइट अबाउट द प्रॉब्लम, then you second paragraph you describe the problem, and third you write your expectations from the concerned authority. तो अब आपने सेंडर्स एड्रेस अपना एड्रेस लिख दिया,
राइट. सो यू आर निर्मल पिल्लाई, सो आपका जो एड्रेस होगा दैट वुड बी ऑफ अलुवा कोची. राइट. डेट आपने लिख दी. जो जिस दिन, सो यू कैन राइट लाइक जैसे 15 फेब को तो 15 फेब 2000. अच्छा, बहुत से बच्चे मैम मुझसे पूछते हैं मैम हमें ईयर कंप्लीट लिखना है. दैट्स अप टू यू, लाइक यू कैन इधर राइट 2025 या फिर आप लिख सकते हो 20 एंड देन यू कैन पुट 2 क्रॉस ऑल्सो. सो बोथ आर करेक्ट, उसमें कोई इतना देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर दैट. तो सेंडर्स एड्रेस लिख लिया. डेट, रिसीवर्स एड्रेस क्या लिखोगी? प्रोजेक्ट हेड इलेक्ट्रॉनिक्स वाटिका न्यू दिल्ली. अब इसमें पिन कोड नहीं दे रखा, तो अब आप बोलोगे मैम हमें तो कोची का पिन कोड नहीं पता, मैम हमें तो न्यू दिल्ली का पिन कोड नहीं पता. डजंट मैटर, आप कुछ भी 1100 एंड देन पुट 2 3 क्रॉस, दैट्स ओके. ऑलराइट, बट पिन कोड लिखना जरूरी है. ऑलराइट. उसके बाद आपने सब्जेक्ट लिखा, देन यू स्टार्ट विद द सैल्यूटेशन सर. एंड देन फर्स्ट पैराग्राफ जैसे मैंने बोला दैट यू नीड टू फर्स्ट इंट्रोड्यूस द प्रॉब्लम. सो इसमें आप क्या लिख सकते हो? द फॉलोइंग लेटर इज रिगार्डिंग ई वेस्ट management. In recent years, e-waste has caused or has deeply impacted the flora and fauna of our entire planet. And then you can also add that considering that the electronic items like smartphones, laptops have become a necessity in every household, in every office, the concern regarding the discarding of e-waste is a matter to discuss about. तो अब आपने पहली लाइन में देखो, जब मैम ने, जैसे मैम ने एनालिटिकल पैराग्राफ में अपने नोट्स बनाए थे ना, वैसे ही अभी तो मैम ने सिर्फ क्वेश्चन पेपर पर ही, ऑल ऑफ यू कैन सी आई हैव मेड सर्टन नोट्स हेयर. ऑलराइट. सो अब ये क्या है? अब ये जो मैम ने नोट्स बना रखे हैं यहाँ पर, ऑल ऑफ यू कैन सी. सो मैम ने क्या किया? मैम ने भी क्वेश्चन पढ़ के कुछ रफ सेंटेंसेस लिख लिए. ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि जो मैम बोल रही है वही वर्ड टू वर्ड आप लिखते जाओगे. व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू हैव अ रफ आइडिया कि आप लेटर में लिखोगे क्या. याद है मैम ने बोला था एक रफ वर्क का कॉलम बनाना जरूरी है. अब आपने फर्स्ट 3 4 लाइंस में इंट्रोड्यूस कर दी प्रॉब्लम. सेकंड में आप प्रॉब्लम के बारे में बताओगे. सो जो ई वेस्ट है उसके बारे में आप बताओगे दैट हाउ इट इफेक्ट्स दी soil. If the unused electronic items, if they are left, if they are not discarded in a proper way, how they impact the quality of the soil. Second, when these electronic items are discarded in water bodies, what is the impact on aquatic life? That how certain poisonous material like lead, when these are released from these electronic items, how much harm is done to these to the aquatic life. All right. Then you also write about that how humans, when they are exposed to e-waste, they are prone to skin diseases, they're also prone to various types of cancer. तो आपने सेकेंड पैराग्राफ में पूरी प्रॉब्लम का जो इम्पैक्ट है, मतलब अगर ई वेस्ट मैनेजमेंट, ई वेस्ट को अच्छे से नहीं डिस्कार्ड किया जाएगा तो क्या क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं और कैसे ये इन द लॉन्ग रन हमें हार्म कर सकते हैं. यहाँ पर अगेन आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी पॉइंट लिख सकते हो. बेटा देखो, प्रेजेंस ऑफ माइंड, being aware of our surroundings is very important when you are writing letter. ठीक है. ऐसा नहीं है कि बोर्ड एग्जाम में आप सोचो कि भाई हम वी आर नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग, वी आर नॉट अवेयर ऑफ, आपको पता ही नहीं है कि भैया ई वेस्ट से रिगार्डिंग क्या बातें हो रही हैं एनवायरनमेंट में. सो जो भी एनवायरनमेंट में आपके आसपास जो भी रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में यू नीड टू बी अवेयर ऑफ. ऑलराइट. सो ई वेस्ट जो है अगर उसको प्रॉपरली डिस्कार्ड नहीं किया जाएगा तो क्या क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं एंड इन द लॉन्ग रन ये कैसे हमें हार्म करेगा, ये सब कुछ आप सेकेंड पैराग्राफ में लिखोगे. थर्ड पैराग्राफ जो होता है लेटर का, उसमें आप हमेशा लिखते हो व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द रिसीवर. ये मैम ने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया, उसका जो लिंक है दैट आई विल पुट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. सो बेसिकली जब आप कंक्लूजन दे रहे हो, जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ है उसमें आप लिख सकते हो दैट दिस प्रॉब्लम ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट कैन बी overcome through various community initiative programs. The influential authorities or the influential people can
establish various centers of e-waste management. There can be a lot of awareness campaigns that can be run in school, in societies, in offices, as to how this e-waste can be discarded by us at the ground level. कि जरूरी नहीं है कि किसी फैक्ट्री में जाके इनका डिस्कार्ड आप कर रहे हो. That how effectively, how in an eco-friendly manner we also can discard these electronic waste and ensuring that these do not harm the environment. So community initiative program hai, awareness campaigns hai, how government can provide various economic as well as infrastructural support to ensure that this e-waste is discarded in the best manner possible. All right, and then of course a concluding line, then in or in anticipation of your reply regarding this concern, I close this letter, or you can write, I hope through this letter your organization can be one of the first organizations to take the initiative regarding e-waste management, thereby establishing a society where ecosystems are not disrupted. So ecosystem की भी आप बात कर सकते हो. So basically आपने लिखना है फर्स्ट पैराग्राफ में कि प्रॉब्लम क्या है, सेकंड उस प्रॉब्लम का इम्पैक्ट क्या है, और थर्ड कि आप इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशंस, आप क्या सजेस्ट कर रहे हो, और आपकी क्या क्या एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम द रिसीवर ऑफ द लेटर. And then yours sincerely, yours faithfully. I generally do not prefer the word faithfully. So yours sincerely, then you do your signature as Nirmal Pillai or N Pillai, ऐसे भी आप कर सकते हो. Your name, and then you can write down a resident of or a concerned citizen. Alright. अब देखो जो सेकंड लेटर है उसमें क्या है, यू आर छवि पाठक ऑफ रांची बिहार, राइट अ लेटर ऑफ अबाउट 120 वर्ड्स addressing the secretary of the city municipal authority, detail the problem of overgrown trees and shrubs in the neighborhood and request the delegation of personnel for regular pruning. Pruning क्या होता है, when trees are cut so that, I mean, they are not uprooted, they are basically shortened in a way that they do not become a problem. I'm sorry. अब इसमें आप क्या करोगे, so आप कैसे लेटर स्टार्ट करोगे, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, salutation, and then you write that the following letter is regarding the problem caused by overgrown trees and shrubs in our neighborhood. All right. फिर आप जैसे लिख सकते हो, we all understand that trees are a necessity for nature, or trees are an integral part of human survival. However, the problem that is being faced in our neighborhood is the overgrown trees and shrubs. And then you write down in the second paragraph what are the problems. First, of course, you can also write about that how these overgrown trees and shrubs block the vision of the person who are traveling on road. Then you write about how these are blocking sunlight. Then maybe you can also तो कुछ थोड़ी सी imagination भी use करनी होती है, positive and constructive imagination. I always say that. So then you write about how maybe some overgrown trees or shrubs, they're overgrown to an extent that their branches are entering the houses of people, which is an open invitation, or the open invitation to many insects, and people of all age groups are subject to threat because some of these insects can be poisonous also. So and then you write, अब देखो यहाँ पर आपको conclusion already दिया गया है, I request you to delegate a personnel for regular pruning so that this problem of overgrown trees and shrubs is looked into. All right. Thanking you, or yours sincerely, then you do your signature, and then you can write a concerned resident or a concerned citizen. All right. So letter writing में आपको क्या ध्यान रखना है, that आपका जो content है, it is absolutely well organized. सबसे पहले आपने लिखा प्रॉब्लम क्या है, सेकंड उस प्रॉब्लम को इन डिटेल एक्सप्लेन किया जिसमें आपने बताया उस प्रॉब्लम के इम्पैक्ट क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, एंड लास्ट पैराग्राफ में आपने कुछ पॉसिबल मेजर्स बताए, या फिर आप एंड इसी के साथ और
ऑलराइट, सो मैं और हिंदी वाला और नहीं बोल रही हूँ, इंग्लिश वाला और बोल रही हूँ, ओ आर। आपने बताया या आपने लिखा दैट व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द रिसीवर ऑफ द लेटर, ऑलराइट। एंड फॉर्मेट याद रखना, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, subject, salutation, and then the 3 paragraphs and then the concluding salutation. And make sure question में जो details दिए गए हैं of the person writing the letter, of the person receiving the letter, ये सब details match exactly in your answer. All right, so I will see you all in the next episode. Till then, wishing all of you the very best.